Previous video we have discussed about introduction of biology. That was clear to you guys. So today we are going to discuss phosphorylation. We are going to discuss phosphorylation. Okay. So phosphorylation is basically the process in which ATP is formed. Okay. It is a process in which ATP is formed. Okay. ATP is formed. Now how ATP is formed? ATP is formed by the addition of ADP, adenosine triphosphate plus one phosphate group. So what ATP is formed? Okay, I hope it is clear how ATP is formed. By the addition of ADP and one phosphate group, we get the ATP. Now we have three types how ATP can be formed by three types. Okay, so here I'm gonna write three types. Our first type, if I talk about, so that is a photophosphorylation. Okay, that is basically what that is. Photophosphorylation. So let's talk about this first, then we'll be going with further on. Right. So what actually this photophosphorylation is? This is basically the formation of ATP. ATP का बनना by ADP and plus phosphate group in the presence of sunlight. Sunlight की presence के अंदर ATP का बनना, right? Required light energy. This process required light energy. Okay, require light energy for the formation of ATP. Formation of ATP. ATP की formation के लिए हमें light required है, right? Now here what ADP plus phosphate group will form ATP in the presence of sunlight. Presence of sunlight. Plus one enzyme is used to form the ATP. ATP बनाने के लिए एक enzyme यूज होता है, that is ATP synthetase. ATP synthetase. This is the enzyme which is used to form the ATP. Fine. So this basically this step occur in where? This step occur in thylakoid membrane of chloroplast. Thylakoid membrane of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहाँ पर? हियर यू कैन सी. ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है. ओ सॉरी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट है. Here we have bundle-like structure. This bundle-like structure is known as grana. Now this grana is made up of. Grana is basically composed of thylakoid. This one coin is known as thylakoid. So this membrane of thylakoid and this phosphorylation process take place. I hope this is clear to you. Moving to a second type. That is basically what? Oxidative phosphorylation.
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, बात की जाए तो चलिए देखते हैं। फाइन, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की एनर्जी रिक्वायर करते हैं। हाउ, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की एनर्जी क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। कैसे, टू फॉर्म द एटीपी, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हाउ, like for suppose in the mitochondria, this basically oxidative phosphorylation occur in mitochondria, and mitochondria electron transfer from electron donor to acceptor। mitochondria के क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं from electron donor to acceptor। इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है, कौन से प्रोसेस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन एनर्जी रिलीज, उस के फॉर्म, उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो काम होती है एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होता है, दैट एनर्जी इज यूज्ड हियर एंड एटीपी is formed, so that energy known as oxidative energy, okay, oxidative energy. Now this process occur in thylakoid, mitochondria, occur in cristae of mitochondria. I hope this is clear too. Moving toward the third step, that is substrate phosphorylation, that is substrate level phosphorylation. Fine. Oh, sorry. Okay. What is that? That is basically substrate level phosphorylation. Phosphorylation. Fine. Now what will happen here? Here basically energy is basically used. Which energy is used to form ATP? Here the enzymatic energy is used. इसके अंदर क्या होता है, यप, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होती है किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वेयर, कहाँ से होता है, द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट, किसी भी एंजाइम से, किसी भी एंजाइम से क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब वो ट्रांसफर होता है तो उसकी एनर्जी हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो वो क्या होता है, एडीपी, और एटीपी के साथ अटैच होता है फॉस्फेट। सो थ्रू दैट एटीपी इज फॉर्म एडीपी plus phosphate, and this one phosphate we gonna use energy of that phosphate, and then ATP is formed. So this is substrate level phosphorylation. I hope these all process steps are clear to you guys. In the next level, we're gonna discuss about some main points of phosphorylation. So bye bye.